So, we'll be taking India book class today. We have divided the India book into different sections like polity, economy, science and tech, geography, all right. So, I'll be taking the polity, economy and science and tech portion. All right. Let us begin. Now, first of all, India book को इसकी क्या utility है? It depends if you are giving the exam for the first time or it is your a multiple timer, right? Because जो first timer देते हैं they don't know much about different schemes, the various political setup. तो उनके लिए at least there is some utility in reading this book from cover to cover. But for them also I'll say कि do this from the basic books like polity is there, do it from Lakshmikant. That is the base book. Always pick a source for a topic which covers 90% of the syllabus. उसको पहले master करके then move on to other sources. So Lakshmikant covers most of the syllabus. उसको पहले master कर लिया then polity is mastered. After that you pick up other sources like India book में polity में कुछ extra दिया है. Then only you do polity from India book. Similarly in the case for economics. You got my point? तो जो आपका एडिशनल सोर्स ये इंडिया बुक है, आई विल पिक ओनली दोज सोर्सेज और दोज मटेरियल फ्रॉम दिस बुक विच इज़ नॉट कवर्ड इन एनी अदर सोर्स बिकॉज टाइम बहुत कम है, प्रीलिम्स इज नियर एंड वी डोंट वांट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट. इस एग्जाम में नेवर डुप्लीकेट योर एफर्ट. सेम चीज़ आप गवर्नर पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत से और गवर्नर दोबारा आप इंडिया बुक से पढ़ रहे हो. वाई? रीड फ्रॉम द सोर्स विच कवर्स द गवर्नर टॉपिक एग्जॉस्टिवली एंड दैट इज द लक्ष्मीकांत. ऑल राइट, दिस इज द पॉइंट. So, if you have been following the newspaper religiously for the past 6 months, then no need to read the India book cover from cover. आपको basic schemes के बारे में पता है, polity आपने basic पढ़ ली है, तो I'll pick those things which are not mentioned anywhere और जो एग्जाम में आ सकती हैं. All right, we'll be very specific to the point. तो polity के 3 चैप्टर हैं, 2, 3 and 20. Economy has 7 chapters and science and tech has 4 chapters. So one by one we'll cover it. What I'll do is, I'll pick some important topics which are not mentioned and we'll see some questions. Both in prelims and mains का वो program था, but now time is very short. Maybe after prelims we'll cover the mains aspect. All right, अभी सिर्फ prelims का देख लेते हैं. So last year question जो paper था, polity की weightage बहुत कम हो गई है. Environment के 31 questions, culture के 15 question थे, science and tech के 5 question थे. तो यही मिला के 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए. And there are 4 traditional pillars in prelims: history, economics, geography and polity. These are the 4 traditional pillars. तो इनका जो importance है, this has been eroded gradually. You can see कि 11 questions have come last year. उससे पिछले साल 18 आए थे. All right, this may not be true for this year, but the point is कि जो बाकी 3 areas हैं, science and tech, environment and culture, they have become very important. These 4 pillars most of the students will prepare. उन पे focus करके जाना. All right. And all the questions from polity they were very easy. Answer key is out. You must have checked it out, right? आपके क्या responses थे? एक question था which was on constitutional government. What is a constitutional government? थोड़ा analytical question था. You remember? There was a question. They were given 2 statements. First was that a constitutional government is such which places effective restrictions on the liberty of the individual to safeguard the power of the state. And second statement was that a constitutional government is such which places effective restrictions on the power of the government to safeguard the liberty of the individual. तो ये 2 statements थी and you had to find out which one is correct with respect to a constitutional government. तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इज सेफगार्डिंग द लिबर्टी ऑफ द स्टेट और लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, प्लेसिंग इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द स्टेट बिकॉज स्टेट इज वेरी पावरफुल. ठीक है ना? तो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. सम पीपल मे मार्क कि बोथ स्टेटमेंट्स मस्ट बी करेक्ट. उन्होंने सोचा होगा कि रूल एंड लॉ नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, तो उसमें दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगे, देन ओनली रूल ऑफ लॉ विल बी फॉलोड. But the basic concept of constitutional government is कि effective restrictions on the power of state because individual को तो curb करना easy है. All right, so only second statement was correct. Apart from that, most of the questions were pretty straightforward. बहुत ही आसान question थे. So if you had mastered Lakshmikant,
you would have faced no problem. All right. So this is the bottom line, Master Lakshmikant, some current affairs also, and you will sail through, no issues, at least in polity. All right. Let's see chapter 2, national symbols. Now it is a very short chapter, but इससे दो क्वेश्चन आए पिछले साल. One was on national calendar and one was on national emblem. So we'll just go through national flag क्या है. They have given a paragraph. I have taken some few lines. उसके रेशियो का क्या है, from where it is taken, Sarnath line of Ashoka. Then an important line is this, कि no restrictions on display of national flag by general public except as provided by emblems and this act is there. So there may be some confusion कि normal public cannot display national flag on their houses, but it is not so. All right. Then display of governor governed by statutory norms. Then there is state emblem. It was adopted from Sarnath law and capital of Ashoka. 4 lines. Then there are 4 animals: elephant, horse, bull, and lion. They could put this in MCQ. कि the 4 lions or 4 animals on the state emblem are A, B, C, and D, like that. Or which of the following is not on the state emblem? They could put. Adopted on this, and this question came in the prelims. Satyamev Jayate from Mundaka Upanishad, meaning truth alone triumphs, inscribed along the abacus in Devanagari script. तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था. यू मस्ट बी फीलिंग के मे बी इट इज़ फ्रॉम कल्चर, बट इंडिया बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन था. ऑलराइट, दीज काइंड ऑफ ट्रिवियल थिंग्स इंडिया बुक से कर जाओ, वो बाकी जगह नहीं मिलेंगी. नेशनल एंथम कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, 52 seconds. This statement is important. First sung on 27 December 1911 at Kolkata session of Indian National Congress. The national song Vande Mataram, composed in Sanskrit and on the famous novel Anand Math. All right, they can give you some statements. Then the national song has not been formally adopted. National anthem has been formally adopted, but national song has not been, because it is basically a hymn for goddess Durga. All right. So some communities are there in India who are against idol worship. So they feel that it is against their religious sentiments. So it has never been formally adopted. राजेंद्र प्रसाद जी ने 24 जनवरी 1950 को issued a statement कि this song has been integral to our struggle for independence. All right, so it will be given equal importance along with the national anthem, though formally it has never been adopted. This is the story behind the national song. First time sung by Rabindranath Tagore in 1896. Rabindranath Tagore, जहाँ भी गाना गाना है, compose करना है, he is there. Then national calendar is there. Again, this question came based on Saka era Chaitra, the first month having 365 years, first Chaitra falling on 22nd March, 21st March. All right, for leap year 21st March hoga, otherwise it 22nd March. Adopted on this day along with Gregorian calendar. Let's see the questions. Now the questions seem very easy. उस टाइम तो लग रहा होगा कि कहाँ से आ गया, बट डायरेक्टली चैप्टर 2 में से पढ़ने की जरूरत नहीं. बाकी उपनिषद चाहे पता ना भी हो, डायरेक्टली गिवन है मुंडाका उपनिषद. देन अगेन चैत्र 1 और नेशनल कैलेंडर, वी मस्ट बी थिंकिंग कि पता नहीं क्या पूछ लिया इन्होंने, बट डायरेक्टली इट इज गिवन इन इंडिया बुक. ए इज द आंसर. ठीक है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड टू पिक फ्रॉम इंडिया बुक. दिस इज इट्स यूटिलिटी. बाकी एनालिटिकल चीज़ें यू विल फाइंड इन अदर मटीरियल ऑल्सो. ऑल राइट. So this was chapter 2. Let's come to chapter 3. Now in chapter 3, a lot of things are given. Initially, citizenship is given, fundamental rights are given, fundamental duties are given. All this you have already read in Polity Lakshmikant. No need to go from this book. Alright, Lakshmikant covers this exhaustively. But point ये है कि एक holistic picture पता होनी चाहिए कि fundamental rights के 6 parts हैं. Alright, what are the different freedoms? Fundamental duties, Article 15(1)(a) should be memorized verbatim. It should be memorized. जो 11 उसके points हैं, all that you should remember.
All right. Then DPSP from 36 to 51, that also should be memorized. पता होना चाहिए कि social justice is there, for panchayats is there, children education is there, access to justice is there. All those things are there in DPSP, you must remember. Already एक बहुत ही simple सा question आया था पिछले साल. Let's see the question. In the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in the which article? Article 51, very simple, right? So it was a very, what is 9th schedule? It has certain laws which are saved from judicial review. Is it so? Now it is not so, right? After 1973, whichever law is included in 9th schedule, it is open to judicial scrutiny. Then fundamental duties तो पता ही है, preamble भी रटा होना चाहिए एकदम, ठीक है ना? Whatever terms are there, whatever loaded terms are there, you should memorize it. तो बहुत simple question था. Then again in this chapter, president is there, appointment and removal powers are there, vice president is there, council of, ये सब चीजें, all this you have done from Lakshmikant. डुप्लीकेट मत करो अपना एफर्ट, दोबारा यहाँ से टाइम वेस्ट करोगे पढ़ के. ऑल राइट. ओके. विच इज द अथॉरिटी विच डिसाइड्स एनी डिस्प्यूट with regards to elections of president and vice president? Supreme Court. Okay, if there is a amendment in the process of election of vice president, is it considered amendment under Article 368? If there is a change in the election process of the vice president, will it be considered an amendment under Article 368? It will not. What about president? Yes. So basically state से related कुछ भी amendment होगी, so that will come under Article 368. All right. Every amendment doesn't require 2/3 majority, you know. तो ये जो थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये दिमाग में रख लो बस. All these things are given in the Lakshmikant, so यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है. This topic is their consultative committees. It is page number 41. All right. So what are these committees? These committees are formed and by Ministry of Parliamentary Affairs. All right. Whenever Lok Sabha is constituted, they are formed, and whenever it is dissolved, they are dissolved. Basically, these are informal avenues for consultation between different ministries on some important topic. Ministers, MPs, then even officers, bureaucrats are there. So any issue is there, they'll form a consultative committee for informal interaction between them, right? So एक पता होना चाहिए, maybe some questions can come. So dissolved and with the dissolution Lok Sabha, reconstitution with the new Lok Sabha. Minister of State in charge of the concerned ministry acts as the chairman of the related consultative committee. For example, there may be some consultative committee for Ministry of Environment. तो उसका जो minister होगा, that will be the chairman. All right. This topic was there in India book, which I found ke it is important, it can come. All right. Then come to page number 43. This question came in 2014. Which of the following is our functions of cabinet secretariat? Preparation of agenda for cabinet meetings, secretarial assistance to cabinet committees, allocation of financial resources to the ministries. Now this topic is given in India book, but India book is silent on the first and third statement. It only gives the second statement. तो लक्ष्मीकांत से अगर आप ये करते तो you will be able to. So that is my point. All right. तो क्या है इसमें? Common sense से क्या लगता है? First सही होगा? Looks correct. Second also looks correct. Third, allocation of financial resources to the ministries. I think that should be prerogative of finance minister. All right. This is not there. So answer is C. Okay. Come to page number 75. Now there is an important topic of official language. All right. What is the official language of our country? Hindi and English both, right? Now here it is given
the relevant articles, Article 343 is there, Clause 1 says that Hindi will be used as the official language. Then Clause 2 says that English will be used for a period of 15 years from 1950. But after 1963 में they enacted the Official Languages Act. तो उसके बाद they gave a classification. They divided the states into 3 categories, A, B and C. तो जो category A states थे, basically they were Hindi speaking states. So there Hindi was used as the official language. Then there was category B states where Hindi and English both will be used. Basically northwestern states हो गए. And then there were category C states where only English will be used as the official language. And any communication between the center and any of these states, Hindi, English both can be used. All right. तो देख लो इसमें here on page number 75 they have given what are the states that comprise in region A. All right, they are Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh. Point number 2, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Rajasthan, Haryana and UTs of Andaman and Nicobar Islands and Delhi. Then region B, Punjab, Gujarat, Maharashtra, Union Territory of Chandigarh. Either English or Hindi. And then C comprising of all states not included in A or B. All right. So this is an important topic. इसको पढ़ लेना अच्छे से and memorize the states. Maybe some statements can be asked on official language. उसमें भी काफी बवाल चल रहा है. All right. Then some factual information given in this chapter. You know, governor can be appointed for 2 or more states. All right. And some governors are such that they have additional responsibility for the union territories as well. So presently governor of Punjab and administrator of Chandigarh, they will be always be the same. तो अभी हरियाणा का भी वही बंदा है, प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी, अकेले इसने संभाला हुआ है सब. एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दमन एंड दीव सेम. ऑलराइट, सम क्वेश्चंस कैन कम ऑन यूनियन टेरिटरीज के यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ हैं, विच हाई कोर्ट्स, what are the high courts under which a particular union territory falls. All right, this can also be there. For example, Dadra and Nagar Haveli, they fall under the Bombay High Court. तो ये सब factual information पता होनी चाहिए. Then there is topic called municipalities. Which part in the constitution? Part 9A. ठीक है ना? And what about panchayats? Part 9. ठीक है? And what are the schedules corresponding to these 2 parts? 11th and 12th schedule. Okay, 11 for panchayats and 12 for municipalities. So here some factual information is given. First municipal corporation, Presidency town of Madras, 1688, and later in Bombay and Calcutta in 1726. Then there is one topic on EVMs, electronic voting machines. First time they were used in 1998, Madhya Pradesh, Rajasthan and Delhi assembly elections. And then in 2004 Lok Sabha elections. These were the Lok Sabha elections in which Subramanian Swamy he lost. Then he went to the Supreme Court and he said that these EVMs are liable to be tampered and there should be some mechanism to counter that, or at least check that if they are not tampered or not. So Supreme Court gave some guidelines. According to that, Election Commission of India came with the scheme of VVPAT, Voter Verifiable Paper Audit Trial. What is that? After you vote, एक प्रिंट आउट निकलेगा, उस पर लिखा होगा कि आपने किसको वोट किया. You will not be able to take that print out back, वो वहीं गिर जाएगा, but you will be able to verify whether जिसको आपने वोट किया है. So this was the backstory of EVMs. Then one more factual information is there. National Voters Day, 25th January. ठीक है ना? Just some information is there. So that is chapter 3. Only that information is relevant which is not given in other sources. Chapter 20 आ जाओ, Law and Justice. Now इसका first page है. Page number 565. Now on page number 565, Supreme Court topic is there, and there is one paragraph right at the bottom. Supreme Court has original jurisdiction in any dispute arising from
then they have given 3 scenarios. But this information is given in Lakshmikant, तो यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं. Very simple question, right? Dispute between center and state falls under original jurisdiction. What is advisory jurisdiction? Article number 143. There are two clauses, clause 1 and clause 2. Under which clause the Supreme Court is bound to give his opinion? Clause 2. All right. Constitution, some amendments or some treaties, international treaties. And under clause 1, Supreme Court is not bound on some public importance. And what about the president? Is he bound to take the advice of the Supreme Court? In neither of the case. All right. Then writ jurisdiction. Can the Supreme Court say no to a writ jurisdiction? Means, does it have a discretion, the Supreme Court? And what about the High Courts? They have the discretion, right? So some very finer nuances are there which can come in MCQs. Okay, some again facts are given. A statement can be made that no union territory has a High Court. All right. But here Delhi has a High Court. Puducherry falls under Kerala High Court. Basically, what the physical proximity of a union territory to a state or a High Court determines state will fall under whose jurisdiction. So Puducherry Kerala के पास है, so it falls under Kerala. Chandigarh under Punjab and Haryana. Punjab and Haryana का खुद का ही एक ही है. All right. Goa, it is a state, but still it falls under. But there are 3 parts of Puducherry, right? In Kerala part is also there. So it has been given to Kerala. All right. Goa falls under Mumbai. Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli fall under Mumbai. Andaman and Nicobar falls under Calcutta. Assam, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh. 4 states fall under Guwahati High Court. Lakshadweep falls under Kerala High Court. Then it is under Puducherry. Which page number? 568? Yes. It is under Madras. Correct. All right. So यहाँ पर पुडुचेरी नहीं है, केरला, it is under Madras High Court. Then 3 new high courts are there in Manipur, Meghalaya and Tripura. All right. So there can be MCQ कि 7 northeastern states are there, which falls under which. There can be a confusion. So Manipur, Meghalaya, Tripura, Assam, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh. You must know which falls under which high court. All right. Then there is a topic called Gram Nyayalaya. Page number 570. Now they have not given much information about this topic, but it is an important topic I feel for this year. So let's see some information. It is the 4th tier of subordinate courts under Gram Nyayalaya Act 2008. So there is a Supreme Court, then there is High Court, then there are subordinate courts, then this is the 4th tier, Gram Nyayalaya. These are mobile courts basically to provide cheap or easy accessible justice to the rural areas. Correct? And here both criminal and civil cases are allowed. Criminal cases where they have set some limits, like for punishment for crimes where punishment is less than 2 years, or for dispute of property involving value less than 20,000 rupees. So some limits they have set. And for civil cases, some disputes under minor laws are there, cattle trespassing, Minimum Wages Act, Domestic Violence Act, which should be resolved at the lowest level only. मतलब citizens को high court ना जाना पड़े या subordinate courts ना जाना पड़े. For them, they have formed the Gram Nyayalaya. Lawyers are allowed, and appeals to higher courts are allowed. All right, these are different from the alternate dispute resolution mechanisms like the fast track courts, then there are lok adalats. These are not ADRs, these are separate. This is the 4th tier of the judiciary. All right. Nyaya Adhikari, who is the first class magistrate, is the head. ठीक है.
Okay, let's move on. Then there is one topic here mentioned, border security. Now here they have given about different forces. Now we follow one border, one force. So on India-Pakistan border there is only one force, which is the BSF. On India-China border, ITBP. Nepal and Bhutan, one same force is there, Sashastra Seema Bal. Indo-Myanmar border, Assam Rifles. And Indo-Bangladesh, again BSF. Alright. So they can give you a match the column type of question. On which border, which kind of force is there. Alright. This will also help you in GS3 paper. वहाँ भी security का topic है ना. But we'll see after prelims. What about coastal security architecture? There is a 3-tier architecture of coastal security. There is the marine police on the coast, and then there is the coast guard, and then there is the navy. All right. So this is the architecture for coast. The longest border we have with which country? Bangladesh. तो ये भी एक ascending order में याद कर लो. All right. चलो. So this was about polity. Let's see science and technology. Now science and technology is very important and very vague also. कहीं से क्या आ रहा है कुछ पता नहीं लग रहा. But some questions were easy last time. Some questions were very difficult. In 2013, 13 questions came, but now last year only 5 questions came. So obviously weightage increase होगा. CAPF paper you must have seen. वहाँ भी काफ़ी साइंस एंड टेक आई थी. 2015 में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं यूपीएससी के, टेक अ लुक एट ऑल द पेपर्स, यू विल गेट एन आइडिया. ठीक है ना. 2015 के सारे अभी जितने भी हुए हैं, CAPF का हुआ है, CISF का हुआ है, लुक एट दीज पेपर्स, यू विल गेट आइडिया. हो सकता है कुछ रिपीट हो जाए, वैसे तो नहीं होगा, but topic may be there which can be repeated. So in 2014 simple questions were there. One question on NASA mission was relatively tough. You had to match the column. So bottom line is ke NCERTs you do 6th to 12th. After that Lucent GK is there. वहाँ से जो factual aspect है physics, chemistry, biology का, you do those. For example, one question came on nutrition deficiency. So that was a very simple question. अगर आपने basic पढ़ के गए होते bio, तो that was a very easy question. And apart from that, look out for current affairs. Various missions are there which are being in space is there, nanotechnology is there, some research in there in robotics field or electronics field. Keep an eye on those things. All right. India book से देख लेते हैं पहले chapter 8. Chapter 8 there is topic on postal system. So some factual information is there. कोई science and tech वाला aspect नहीं है इस chapter में, which could be asked. Modern postal system first established by Lord Clive in 1766. Factual informations लिख लो ये. October 1854, first postage stamp which was valid across the country was issued. Now there could be a question that postal offices initially only offered remittances, only offered postal services. But here you see it is given in India book. Then post offices provided remittances, banking and insurance services also. In the later half of the 19th century, means in 1880s or 1882, they were providing these kind of services. All right. So this could be a statement. Then there is one project arrow is given. इतना ज़्यादा relevant नहीं है, but we must not miss out on anything. इसके दो aims हैं. First aim is to improve the core services of the post offices, and second aim is to improve the look and feel. थोड़ा अच्छा सा पेंट कर दो, डेकोरेट कर दो, साफ सफाई रखो. You must have feel the change in the post offices these days, right? So it was conceived in 2008, Project Arrow. Now they have given very थोड़ा factual information दे रखी है कि इतने हजार post offices were there. We have successfully implemented Project Arrow. इतने पैसे allot किए थे, इतने खर्च हो गए, इतने बच गए. No need to go for that. ठीक है ना? Only those things are important which are technical of nature. So this was now national policy of electronics, a very old policy.
but it is given in India Yearbook. We must not miss out on it. 4 aims, एक इंडिजीनियस इकोसिस्टम बनाना है. ऑब्वियसली चिप मैन्युफैक्चरिंग तो करनी होगी, इकोनॉमिक जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. देन मेजर इनिशिएटिव्स अंडर दिस स्कीम, semiconductor wafers lab. Still there is no wafer lab. They are in process of setting up a wafer lab. Then preference to domestically manufactured electronic goods 30%. They are in the process of enacting a procurement policy also. Then electronic manufacturing cluster scheme is there. Cluster approach ले लेते हैं, ये तो पता होगा common approach है. जब भी कहीं setup करना होगा, SEZs होगा, NIMZs होगा, they take the cluster approach. Food processing zone setup करने हैं. Cluster approach, what is it? कि different aspects of that process, they'll set up all that in one place. ठीक है ना, ताकि transportation cost decrease हो जाए. They can share resources. So this is the cluster approach. कहीं भी कुछ याद ना है, कहीं mains में लिखना हो, cluster approach. ठीक है ना, लिख दिया करो. Then they have set up electronics development fund. That is to promote innovation, intellectual property, R&D. All right. So statements may become only to promote manufacturing, or only to promote, or it is also to promote intellectual property. So you can answer from this. Then again, one very old topic, but still very relevant. National Optical Fiber Network. All right. पंचायत का नंबर पहले 2 लाख था, अब 2.5 लाख कर दिया है. कनेक्शन किसी को मिला नहीं अभी तक, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं बस. सो दे हैव सेट अप अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, प्रोजेक्ट फंडेड फ्रॉम USOF, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, टू इंक्रीज कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज. देन एम टू प्रोवाइड वर्टिकल कनेक्टिविटी फ्रॉम ब्लॉक टू डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक टू पंचायत, 100 Mbps कनेक्शन, 10 Mbps horizontal connectivity to 10 public institutions with the panchayat. ठीक है, very commonsensical aims are there. ठीक है ना, इतना भी बड़ी बात नहीं. Then this is an important topic, FOSS, free and open software promotion. So we are promoting free and open software, and under this we have developed a operating software also, Bharat Open Operating Solutions, BOSS, Bharat Operating System Solutions. So it is a Linux based OS. It is in desktop version also, and EduBOSS is there, which is for educational purposes also, for schools, colleges, and they have also brought out a version which is for servers. It is under which Department of Electronics and Information Technology, fostering adoption of free and open source software. All right. तो कौन प्रमोट कर रहा है? DT प्रमोट कर रहा है, लाइनेक्स बेस्ड है. ठीक है ना, फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, फॉर नॉर्मल पर्पसेस ऑल्सो. दीज आर द स्टेटमेंट्स विच कुछ कम इन द MCQ. ठीक है ना, फॉस. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन. नाउ चैप्टर 9 डिफेंस इज देयर. डिफेंस से क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम ऑन अग्नि मिसाइल. So in this chapter they have not given any information on any kind of missile. बस इन्होंने दिया है कि हमारे ये एकेडमीज़ हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ से इतने लोग निकल रहे हैं, इतना पैसा हमने खर्च कर दिया, DRDO ने ये कर दिया. बट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो चाहिए, जो एग्ज़ाम में आ सकती है, दैट इज़ मिसिंग. देर आर 2 इन्फॉर्मेशन विच आई फाउंड. दे हैव जस्ट मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 243. On page number 243, they have given some information regarding that India is in the top 5 countries which have their own ballistic missile defense system. फिर इनके पास अपनी न्यूक्लियर सबमरीन है, हमने MBT बना दिया, मेल बैटल टैंक. But we must know कि what are those countries which have a ballistic missile defense system. There are 5 countries: US, Russia, France, the permanent members of the United Security Council, and then India is there and Israel is there. ठीक है. And what is the missile defense system? Our missile defense system. First of all, ballistic missiles are long range missiles which have a parabolic trajectory. Cruise missiles are tree top. Tree top कहते हैं उन्हें. They cruise at a very low altitude, just like a small jet. तो ballistic missiles they come from a very great height. तो उनके लिए एक defense system चाहिए.
So there is two-tier defense system. One is the Prithvi and second is the Pradyuman. Prithvi is for high altitude and Pradyuman is for low altitude. So Prithvi is there 50 to 80 kilometer and Pradyuman is there for 30 kilometer. So 50 to 30 कौन करेगा फिर? जो गैप रह गया है. Basically, these are those ranges which is the prerogative of a single missile. तो इस रेंज में कोई भी काम कर सकता है. All right. So this we must know. What is the ballistic missile defense system? And then there is one more information given on top 6 countries having nuclear powered submarine. So again, US, Russia, France, UK, permanent 5 members, and China. And India also. All right. What are the advantages of a nuclear powered submarine over a diesel one or a conventional one? They can stay underwater for a longer time. They don't need refueling. All right. They can travel longer distances. So stealth capacity उनकी increase हो जाती है. All right. So this was from the defense chapter. Mass communication. Again, chapter 13 is it? Chapter 22. Some factual information is given here. Apart from that, they have given the architecture. के प्रसार भारती में 2 कंपोनेंट हैं, एक ऑल इंडिया रेडियो है, एक दूरदर्शन है. प्रसार भारती ने ये प्रोग्राम्स इनिशिएटिव्स लिए, नॉट इम्पॉर्टेंट. ऑल राइट. फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्ट बाय रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे इन जून 1923. तो फर्स्ट म्यूनिसपैलिटी कब आई, फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम कब आया, ऑल दिस इंफॉर्मेशन कुड बी आस्क्ड. AIR was first established in 1936. Chapter 22. Page number 632. Second paragraph they have given. The first radio program broadcast by Radio Club of Bombay. All right. At the time of partition, 6 radio stations were with India and 3 went to Pakistan. ढाका वाला फिर बांग्लादेश चला गया. AIR became Akashvani in 1957. All right. Now come to page number 651. Now here they have given something about Press Council of India. Regulation of press is always in news. So here some factual information is given regarding PCI. Press Council of India set up in under 1966. So 2 objectives थे इसके, एक तो preserving the freedom of press and improving the standards of press. It acts as a quasi-judicial authority. Then composition is given in the second paragraph. Chairman is there, who by convention is a sitting retired judge of the Supreme Court, and 28 other members are there representing press, Ministry of Parliament, and 3 representing culture, literary and legal fields. Now Press Council of India is dependent for the finances on Government of India, as given in the third paragraph. Now one important information is given in page number 1652, that what are the powers of PCI. The powers of PCI are limited to, it is given in the later half of the first paragraph, that it can warn, admonish and censor the newspapers. All right. So it has no power to impose any penalty. This you must know. This is the point which we must take away. It has no power to impose any penalty. All right. Its decisions are final and cannot be challenged in any court of law except by way of writ petitions. All right. So this was the information regarding Press Council of India. Come to chapter 25, Science and Technological Developments. Chapter 25, page number
Page number 752. Now on page number 752, on the second paragraph, they have written mega science facilities and mega science programs were supported to improve access to state-of-the-art facilities. New programs for setting up of India-based neutrino observatory, 30-meter telescope and national large solar telescope have been initiated. So here they have not given what these projects are, but these projects are very important. In 2015 only, two of these projects were approved, 30-meter telescope and neutrino-based observatory. So we'll see क्या है ये. So India-based neutrino-based observatory is there. It has been news for quite a while, but अभी पास किया है तो we must know कि डिटेल में क्या है. First of all, what is a neutrino? Neutrino is basically elementary particle, and they are quite a large amount of neutrinos in the universe. They are electrically neutral, and we are still not sure कि whether they are without mass or they have a very small mass. तो बेसिकली ये जो न्यूट्रिनो बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है ये इसीलिए है कि न्यूट्रिनोस को अलग से कैप्चर करना और उनको स्टडी करना whether they have mass or not, and because they are of so many number, such a large number of neutrinos are there in the universe, so we can know कि whether they can give information regarding expansion of universe also. So basically ये हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव ही है. ठीक है, उसके बाद और क्या होगा, न्यूट्रिनो बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है तो बेसिकली अदर साइंसेस को भी प्रमोट करेगा. ठीक है ना. उसके बाद इट इन्वॉल्व्स डिटेक्शन, सो इट विल इम्प्रूव डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो विच कैन बी यूज्ड इन अदर आर्मी मिलिट्री पर्पसेस. तो ये सब पर्पस हैं इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के. अब इसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ये है कि न्यूट्रिनोस को कैप्चर करना इट इज़ वेरी टफ. So that is why the hill under which this observatory will be made, it is made of hard rock, which will thwart all other kind of radiation except for the neutrinos. तो neutrinos को सिर्फ study there we can do. हिमालयास के जो ऊपर वाले rock systems हैं, hills हैं, they are of soft rock, so they will not be able to differentiate other radiations from the neutrino radiations. But here the hill chosen in Tamil Nadu, that hill has this characteristic. All right. तो यही तीन एम्स दिए हैं इसके. न्यूट्रिनो वेदर दे हैव स्मॉल मास और नॉट, फॉर अदर स्टडीज इन फिजिक्स, बायोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, एंड डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज फॉर वेरियस एप्लीकेशंस. 3 kind of neutrinos are there: electron, muon and tau. Most neutrinos pass through Earth, emanate from sun. Sun is a major source of neutrino emission. बाकी इसमें अब टेक्निकल एस्पेक्ट दिया है कि इन दिस केव देयर विल बी अ आयरन कैलिरोमीटर. इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो. इसमें मैग्नेटाइज आयरन प्लेट्स होंगी, न्यूट्रिनोज विल कोलाइड विद दीज एंड म्यून्स विल बी जनरेटेड एज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिनो. उनको फिर RPCs आर देयर, रेजिस्टिव प्लेट चैम्बर्स. ऑलराइट, दे विल डिटेक्ट दिस एंड देन दे विल स्टडी इट. ठीक है, बेसिक ज़्यादा टेक्निकल की जरूरत नहीं है. इन GS वी नीड टू गो 1 or 2 steps डाउन. ज़्यादा एकदम साइंटिस्ट नहीं बनना. वी मस्ट नो वॉट अ सिविल सर्वेंट मस्ट नो कि क्यों वहाँ सेटअप हो रही है, न्यूट्रिनो क्या होना चाहिए. ठीक है ना, क्या पर्पस है इसका, ऑल दैट थिंग्स. तो ये एक्सपेरिमेंट है. वाई इट इज सेटअप देयर ऑल गिवन. देयर ऑल्सो इट इज गिवन द इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज सराउंडेड बाय एटलीस्ट अ किलोमीटर ऑफ रॉक ऑन ऑल साइड्स, शील्ड अगेंस्ट अदर रेडिएशंस दैट कुड स्वैम्प द डिटेक्टर. ऑल राइट. सो दिस वॉज अबाउट द इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी. Got it? अब आ जाओ 30-meter टेलीस्कोप पे. Now in 30-meter telescope, basic purpose is दुनिया को देखना, observe the stars, universe. All right. तो this would be the second largest telescope when built. एक और बहुत बड़ा टेलीस्कोप बिल्ड हो रहा है, यूरोपियन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप 42 meters. Now 30 meters is the dia of the primary mirror, जो इसका मिरर है, but it is not made of one single mirror. It is made up of many mirrors, because एक बड़ा सा मिरर होगा, it will sag, it can also collapse under its weight. All right. तो बहुत सारे मिरर्स को जोड़ के एक 30 मीटर का बड़ा टेलीस्कोप बनाया जा रहा है. Where it is made, built on a hill called Mauna Kea in Hawaii. Why on a hill? Because first of all it is infrared telescope. It will use infrared. Why not optical? Because basically it wants to observe newborn stars, newborn galaxies. So there what happens that there is a lot of dust
which is formed in this process. So this dust obfuscates the optical rays, but infrared rays pass through it. तो इसलिए IR में से ऑब्जर्व किया जा रहा है. IR में ये उन स्टार्स को ऑब्जर्व करेगा. एंड वाई ऑन अ हिल? बिकॉज वाटर वेपर मॉइस्चर है, दे अब्जॉर्व IR रेज. तो हिल पे फिर ज़्यादा मॉइस्चर आपको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर देर विल बी ग्रेटर इनटेक ऑफ IR रेज. ऑल राइट, सो दिस वॉज द टेक्निकल इंफॉर्मेशन. एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग द IR रेज दे विल ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रम. जिस भी स्टार से आ रहा होगा उस स्टार का स्पेक्ट्रम पता लग जाएगा. एंड दैट स्पेक्ट्रम विल टेल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द स्टार, क्या उसमें मैटर है, मटीरियल है, ऑल दोज थिंग्स. What are the countries involved? US, Japan, China, India and Canada. India is everywhere. ठीक है. US, 5 countries we must know. It can come in MCQ. Then what is the benefit to India? Obviously कुछ पता लगेगा हमारे साइंटिस्ट को भी कि कैसे करते हैं कुछ. All right. And they'll also get time to spend there. कुछ टाइम उनको मिलेगा वहाँ जाके खूब वो भी देखेंगे, कुछ ऑब्जर्व करेंगे. They'll also find something. All right. And India is contributing materially also. 10% हमेशा जो हमारा रहा है, we are contributing. ठीक है. This was about TMT. Some technical information is there. Some political information is there. This is it. उसके बाद इसमें एक नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप भी है. तो बेसिकली इट इज़ नथिंग. लद्दाख में हम खुद बना रहे हैं इंडिजीनियसली. वी आर कंस्ट्रक्टिंग इट. And it will have a 2 meter aperture. It will be totally solar powered. तो इसका USP यही है कि it is the largest solar power telescope. कोई ज़्यादा technical marvel नहीं है इसमें कुछ. All right. Not that important topic. So this was it. उसके बाद there is some topics mentioned in this chapter. I picked up harmful algal blooms. Now what is a algal bloom? Unexpected or exponential growth of algae in marine or coastal ecosystem or in freshwater also, that is called algal blooms. Now all algal blooms are not harmful. Only some 2% of algal blooms are harmful, but they are harmful in a very devastating way. It will hamper the agriculture there, the marine life there, fishing hamper कर देगा. All right, that will be the harmful effects of HAB. Then why it happens? Obviously urban waste, all right, agricultural fertilizers, pesticides, basically those which are rich in nitrogen and phosphorus. जब वो बहुत large quantity में they go into water bodies, then it results in algal blooms. And too much sunlight also, it promotes HABs. Then there are some kind of species like zebra mussel. They specifically predate on non-harmful algal blooms. तो उससे सिर्फ एल्गल ब्लूम्स ही रह जाते हैं, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स. सो दैट ऑल्सो इज अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर. ठीक है ना. सो दिस इज द होल इंफॉर्मेशन अबाउट HABs. दिस हैज बीन रिटन इन दिस स्लाइड. मे अकर बोथ इन फ्रेश वाटर एंड मरीन. MCQ आ सकता है कि दे अकर ओनली इन मरीन एनवायरमेंट, बट दे अकर इन फ्रेश वाटर ऑल्सो. ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर, डेंजरस टॉक्सिन्स, एसोसिएशन विद लार्ज स्केल मरीन मोर्टैलिटी, various types of shellfish poisoning. ठीक है ना. Marine environment, single cell microscopic organisms, well lit water surface. Basically sunlight is a very important factor. ठीक है ना. Of the 5,000 species of marine phytoplanktons that exist worldwide, about 2% are known to be harmful or toxic. ठीक है. ये सब they create dead zones, raise treatment costs of drinking water, hurt industries that depend on clean water. ना पढ़ के भी बंदा लिख सकता है ये तो खुद से. इतनी इमेजिनेशन तो होनी चाहिए. यू आर इन सिविल सर्विसेज. ठीक है. देन व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आई हैव टोल्ड यू. एग्रीकल्चर, इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, सनलाइट, इंडस्ट्री, अपवेलिंग, फॉस्फोरस. ज़ेब्रा मसल नहीं है ये, दिस इज दिस वाला मसल. ठीक है, ये गलत है. ज़ेब्रा मसल, this is kind of a species which selectively feed and filter out other algae and enable harmful algal blooms to flourish. ठीक है. So this was about harmful algal blooms. Then there is a mention of superconductivity. Most of you must know what is superconductivity. All right. When a material is cooled below a specific point, it loses its electrical resistance.
सो उसमें फिर वो इनफाइनाइट कंडक्टिविटी हो जाती है उसकी. नाउ व्हाट इज दैट टेम्परेचर? इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स और एलिमेंट्स. एप्लीकेशन क्या है? मागलेव ट्रांसपोर्ट में है. द रेल्स आर देयर. तो बेसिकली रेल्स आर व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन बोथ द रेल्स. तो वहाँ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक एक्ट करता है. दे बिकम मैग्नेट्स, दे पुश अगेंस्ट ईच अदर. तो इलेक्ट्रिक उसकी सुपर कंडक्टिविटी होगी तभी उसमें कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी विल बी वेरी लेस, मिनिमल. अदरवाइज रेजिस्टिविटी लॉसेस विल बी मोर. तो मागलेव ट्रेन में ये मैसनर इफेक्ट होता है, ये यूज़ होता है. देन इट इज़ यूज्ड इन डिटेल्ड इमेजेस इनसाइड ह्यूमन बॉडी, वहाँ भी यूज़ होता है. ऑलराइट. देन देयर इज अ मेंशन ऑफ अ प्राइज, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज. So it is given by CSIR. After you attain the age of 45 years, you are not eligible for this. तो 45 साल से पहले ही कर लो जो रिसर्च करनी है. These are the 7 fields. It is applicable for both applied as well as fundamental research. तो applied में engineering आ गया, earth atmosphere आ गया, fundamental में आपके physics, biology. All right. These are the 7 fields. 1958 it was founded. शांति स्वरूप भटनागर जी थे हमारे फाउंडर डायरेक्टर, उनके नाम पे. Then these are the conditions. Original work done in the preceding 5 years. Citizen of India. Prize में क्या है? They give you a plaque, a citation. शॉल नहीं मिलती थी पहले, शॉल नहीं मिलती थी शायद. 5 लाख रुपए दिए जाएंगे. And the receipts will get 15,000 per month up to age of 65 years. Each discipline can have multiple winners. All right. This was the information regarding SSB. Let's move on. Radioisotopes and its application. This is given in page number 776. Now first of all, what are radioisotopes? These are those isotopes which are unstable and they emit some kind of radiations like alpha, beta, gamma rays until they achieve a stable state. Now these radioisotopes can either be naturally occurring or they can be artificially made depending upon our purpose. तो ये सब, what are the application of radioisotopes? Smoke detectors, irradiation in pest control. We know gamma rays के through irradiation of food is done. What are the benefits of irradiation over normal preservation methods like adding pickle and all that? Basically irradiation, the shelf life is longer and also the taste of the food is not altered. तो उसमें पता नहीं लगता कि टेस्ट क्या है, तो जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वही रहता है. ऑलराइट. So their gamma rays are used, so they must be using some radioisotope which emits gamma rays for preservation in pest control. Then in medical treatment also they are using X-rays for examining patients, radiotherapy is there, nuclear medicine is there. Then in fruit preservation I was telling food irradiation by exposing it to gamma rays or radio telescope. Alright. Now there is a mention of Indian nuclear program on page number 765. Now we must understand what is our Indian nuclear program. No, it was formulated by Homi Bhabha. इसका बेसिक पर्पस क्या था कि वी हैड लार्ज अमाउंट्स ऑफ थोरियम बट वी डिडंट हैव लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूरेनियम. तो फ्रॉम थोरियम वी हैड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी. दैट वाज आवर एम. फॉर दैट होमी भाभा डिजाइन 3 स्टेज इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम. इनिशियली कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा था. नोबडी वाज हेल्पिंग अस. वी कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑल्सो. आफ्टर दैट न्यूक्लियर बहिष्कार हो गया हमारा. So Homi Bhabha designed this for
self dependence. Now what is the purpose here? कि फर्स्ट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, हेयर नेचुरल यूरेनियम जो यूज होगा दैट विल बी फेड इनटू इट. नेचुरल यूरेनियम थोड़ा बहुत इंडिया में भी है, मोस्ट ऑफ इट वी वुड हैव इंपोर्टेड. फर्स्ट स्टेज की कैपेसिटी होती 10 गीगावाट्स. उसके बाद जो प्लूटोनियम प्रोड्यूस होता है दैट वुड हैव बीन फेड इनटू फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स? की प्रोड्यूस मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स. तो प्लूटोनियम जो प्रोड्यूस करता है तो प्लूटोनियम और यूरेनियम 233 प्रोड्यूस करेगा. दैट प्लूटोनियम विल अगेन बी फेड टू प्रोड्यूस मोर प्लूटोनियम. बेसिक एम इज टू प्रोड्यूस U233. उसके बाद जो 233 प्रोड्यूस होगा दैट विल बी फेड इनटू द लास्ट स्टेज अलॉन्ग विथ थोरियम. तो उसमें बस हम थोरियम फीड करते जाएंगे और जो U233 आएगा एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फ्यूल. काफ़ी मेजर फ्यूल है थोरियम का हमारे पास. So we would have become self-sufficient. That was the total aim. But अरीवा सेटअप कर रही है ना, कहाँ पर? जैतापुर में. क्या कैपेसिटी है उसकी? 10 गीगावाट्स. उसकी अकेले की 10 गीगावाट्स है. ऑलरेडी वी हैव सेटअप सो मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स. सो हैव वी गॉन एस्ट्रे ऑफ अवर इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? नाउ आर वी डिपेंडिंग ओनली ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल? हमारा जो एम था टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट दैट हैज नाउ बीन साइडलाइन. बट देयर इज अ रीजन फॉर इट. बेसिकली दिस सेकंड स्टेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम. अभी भी इसका प्रोटोटाइप चल रहा है, ऑल राइट, एंड इट विल टेक 50 ईयर्स ये सेकंड स्टेज को बनाने के लिए. सो साइड बाय साइड व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव आवर एनर्जी नीड्स, तो उनको भी फुलफिल कर रहे हैं, एंड साइड बाय साइड रिसर्च इज ऑल्सो गोइंग ऑन. सो ऑल दिस इज कॉल्ड द बुद्धास पाथ, द मिडल पाथ, बैलेंस्ड. ठीक है ना, अपना काम भी कर रहे हैं and we are going on for research also. Obviously research को थोड़ा sideline हो जाता है जब people have this approach कि we are only depending on imported fuel, but research is going on fast breeder reactors. So this is our 3-stage Indian nuclear program. अब इसमें कुछ technical terms हैं with regards to nuclear program. Moderator, coolant, ठीक है ना, ये सब पता होने चाहिए. Moderator क्या होता है? Basically in fission reaction you require to slow down the speed of the neutron to a certain level. अगर ज़्यादा स्पीड से होगा तो नहीं होगा fission. So moderator is that part which slows down the speed. Then what is a coolant? Fission reaction produces lot of heat. उस heat को absorb करना है तो उसके लिए coolant होता है. That coolant turns into steam. That steam runs turbine. फिर उससे electricity generate होती है. ठीक है ना? This is the. Then there is controlling rods also. When there is a certain danger ki reaction is going out of control and we need to shut down the reaction or slow down the speed of the reaction, then there are control rods. They are usually made of boron. ठीक है ना? So these are some technical terms you must know. This is again a diagram of. So 10 गीगावाट हमारी यहाँ की कैपेसिटी हमने मानी थी, 300 गीगावाट उसकी मानी थी. ठीक है ना? अभी टोटल जनरेशन कितनी है हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी की? व्हाट इज आवर कैपेसिटी? इट इज़ अराउंड 250 गीगावाट्स, राइट? तो देख लो सेकंड स्टेज की क्या कैपेसिटी है. सो इट विल टेक टाइम. तो दिस इज अगेन व्हाट आई टोल्ड यू, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, प्लूटोनियम U233, थर्ड स्टेज ब्रीडर. ऑल राइट. देन फर्स्ट स्टेज फ्यूल इज नेचुरल यूरेनियम, plutonium is generated, coolant is heavy water. Both coolant and moderator are D2O. So D2O can act both ways, coolant as well as moderator. Then fast breeder reactors, ठीक है ना, which produces more fuel than they consume. तो एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जब प्रोड्यूस करने लगेगा प्लूटोनियम, दैट प्लूटोनियम विल बी फेड इनटू अनदर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फिर वो और प्रोड्यूस करेगा, देन थर्ड, ऐसे करके बहुत सारे FBR हो जाएंगे. देन व्हेन FBR कैपेसिटी विल बी सेल्फ सस्टेनिंग, देन विल मूव ऑन टू थर्ड स्टेज. दिस इज अवर एम. Then third stage basically thorium as fuel. All right. Then there is mention of some space programs in the book. Page number 795. Second paragraph, there is mention of Astrosat and also Aditya 1. तो आदित्य 1 क्या है? It is a space solar coronagraph.
कोरोना ग्राफ क्या है? बेसिकली सन इज देयर, द आउटर लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड कोरोना. नाउ द सन exhibits some kind of activities which needs to be studied, like solar flare is there, then coronal mass ejections are there. What these activities do, ke there is a time period like 11 years cycle is there when these activities are initiated. So they affect the electrical system of the earth, electricity जो हमारी जा रही है. Then space stations also they affect, satellites they affect. So we need to study कि what is the time period of such ejections and how to safeguard our instruments against these kind of solar activities. तो इसीलिए ये स्पेस में लॉन्च किया जाएगा एंड इट विल स्टडी. तो दो एक्टिविटीज़ हैं. सोलर फ्लेयर. सोलर फ्लेयर इज व्हाट? इट इज़ नथिंग बट रैपिड वेरिएशन इन सन्स ब्राइटनेस. अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड आफ्टर द सोलर मैक्सिमम. इट इज़ बेसिकली 11 ईयर सन्स ईयर साइकिल. हर 11 साल में सोलर मैक्सिमम आता है and a lot of energy is released. These radiations ionize sun's upper atmosphere and expand it. Hence, long-range satellite equipment can be damaged. So basically, this satellite can warn against some imminent solar flare, and we can take some precautions. Then the second activity is coronal mass ejections. Here, what happens? Ke a lot of plasma is carried away from the sun's surface, and it is also observed to happen near the solar maximum. बट सोलर फ्लेयर और CME में कोई कनेक्शन नहीं अभी तक मिला है. देन दिस इज 3 CMEs पर डे नियर सोलर मैक्सिमम. एंड व्हाट हैपन्स कि अर्थ मैग्नेटोस्फीयर इज देयर ना, सो इट कॉजेज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स. सो जितने भी मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर डैमेज्ड. नाउ हाई जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स दे आर अफेक्टेड, बट लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशंस दे आर लेस अफेक्टेड. व्हाई? Because these radiations interact with our magnetosphere. तो magnetosphere इनको deflect कर देता है towards the poles. ठीक है ना? So that is why low earth orbit वाले they are protected, and towards the poles they give the enhanced auroras. We must have read about this. Very colorful displays observed near the north and south pole. तो ये basically यही है, interaction of CMEs with the magnetosphere and towards the poles. All right. Disrupt electrical equipment power lines. So Aditya 1 का aim ये है. Now they can give you a MCQ where just like previous year वहाँ उन्होंने Cassini, Hughes और NASA के कुछ space satellites दिए थे. So here also they can say कि future launches are there and what is their purpose. Astrosat can be given as a solar coronagraph and Aditya 1 can be given as the astronomical satellite. उल्टा दे सकते हैं, so you must know. एस्ट्रोसैट नाम से ही लग रहा है एस्ट्रो एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट. सो बेसिकली इट इज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट डेडिकेटेड टू एस्ट्रोनॉमी. इट विल स्कैन द यूनिवर्स इन एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट. बोथ दीज मिशंस आर टू बी लॉन्च्ड, फ्यूचर मिशंस. ऑलराइट. सो दिस वाज अबाउट द साइंस एंड टेक. Now there is a mention of stem cells. Now what are stem cells? Stem cells are those cells which have the capacity of self-renewal. They can build themselves up again and they can generate into every organ of the body. Alright. For example, there are pluripotent stem cells which can generate into every part of the body. Then there are multipotent stem cells which can generate only into specific parts of the body. Not all parts can be made from those cells. तो ये डिस्टिंक्शन पता होनी चाहिए. स्टेम सेल्स की डेफिनेशन पता है. देन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर देयर. ये न्यूज़ में काफ़ी आता रहता है. यूरोप हैज़ बैंड यूजिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स फॉर थेरेपी बिकॉज दे कंसिडर एम्ब्रियो एज अ लिविंग बीइंग. सो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स निकालने के वक्त एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो इट दे फाइंड इट इक्वलेंट टू मर्डर. तो देयर इट इज़ बैंड. Now embryonic stem cells are pluripotent. Every kind of stems organ can be generated from these cells. 3 derm layers are there: endoderm, mesoderm and ectoderm. तो जितने भी organs हैं they can be made from embryonic stem cells. Then IPS is there, induced
प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है ना. एडल्ट स्टेम सेल्स दे आर मल्टीपोटेंट, लाइक हीमोटोपोटिक सेल्स. हीमोटोपोटिक सेल्स आर फाउंड इन द बोन मैरो, वो ल्यूकीमिया के लिए यूज होता है. सो दीज कैनॉट जनरेट इनटू एवरी काइंड ऑफ ऑर्गन. तो अब ये टेक्निक से क्या करते हैं कि दे रीप्रोग्राम द एडल्ट स्टेम सेल्स टू जनरेट इनटू द काइंड ऑफ ऑर्गन विच इज डिमांड बाय द पेशेंट ओनली. तो थोड़ा सा कस्टमाइज हो जाता है इसमें, और इसमें किसी और से स्टेम सेल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती. दैट पेशेंट ओनली, फ्रॉम हिम ओनली वी कैन, और हर ओनली वी कैन टेक द stem cell and induce it to produce the kind of organ. All right, so this was IPS and this is embryonic stem cells. Pluripotent का difference है, multipotent का difference है. All right, अभी मेंस में देख क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में तो they'll only ask technical aspects. In mains it can ask कि what are the legal, social and philosophical implications of using embryonic stem cells for therapy. All right, जैसे एक सरोगेसी पे क्वेश्चन आया था in 2012, similarly इस पे भी आ सकता है. We'll see after prelims. So this was the technical aspects of the stem cells. Now comes the economics part. Again economics की भी weightage कम हो गई है. 10 questions only came. And whatever questions came, they were damn easy. बहुत ही ज़्यादा सौखे थे. So my advice will be कि master the basic concepts 11th-12th के. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है ना, करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है. ऑल दीज बेसिक थिंग्स यू मास्टर. इंटरेस्ट रेट का क्या इफेक्ट होता है मनी सप्लाई पे, इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट होता है, व्हाट इज ब्रॉड मनी, व्हाट इज नैरो मनी. ऑल दीज टेक्निकल एस्पेक्ट्स यू मास्टर. देन देयर इज करंट अफेयर्स, वेरियस स्कीम्स आर देयर. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम है. नाउ टेल मी, इन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme, what are the districts are, how many districts are, first tell me, included? 100. What kind of districts are included? What is the criteria for including a district? हाँ क्या, low sex ratio means only those districts are included which have child sex ratio below the average national child sex ratio. No, there are other districts also. Those districts which are having child sex ratio above the national child sex ratio, but they are showing a declining trend. So these kind of districts are also included. So एक जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है हर स्कीम का, जैसे आम आदमी बीमा योजना आ गई, कितने प्रीमियम है, स्कॉलरशिप का क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो टेक्निकल एस्पेक्ट पढ़ के जाओ. दैट विल कम इन इकोनॉमिक्स. ऑलराइट, so that will be sufficient. ज़्यादा इकोनॉमिक्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं. कम टू चैप्टर 19 इंडस्ट्री. पेज नंबर 482. Now here they have given there are 5 industries now which still require an industrial license. Licensing regime has been abolished. These are the industries where it is not prohibited for private sector to come, but you require an industrial license. In other, you just register your company और काम शुरू करो. Here you require a license. Let's look कौन सी सर्विस. Electronic, aerospace, defense equipment of all types, industrial explosives, specified hazardous chemicals, cigar and cigarette, distillation and brewing of alcoholic drinks. So here you still require a license. 482 पे दिया है. Then there are 2 industries where private sector is prohibited. What are those? दो सेक्टर कौन से हैं?
रेलवे एंड न्यूक्लियर और स्पेस. स्पेस में नाउ इट इज अलाउड. देयर इज अ कंपनी ऑल्सो कॉल्ड ध्रुवा एरोस्पेस. बेसिकली यहाँ दिया है पेज नंबर 483 पे, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेलवे एज अ होल नहीं, इन मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट इज अलाउड. ठीक है ना, कोचेस बनाने के लिए, बोगीज बनाने के लिए इट इज अलाउड. ओनली रेलवे ट्रांसपोर्ट प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अलाउड. ठीक है. स्पेस में ध्रुवा इज अलाउड. बेसिकली स्पेस में क्या है कि इसरो ने इतना मार्केट कैप्चर कर रखा है, दे आर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स एट सच अ फ्रूगल रेट्स कि कोई compete ही नहीं कर पा रहा है. ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही सस्ते में काम कर रहे हैं, बट इट इज अलाउड. स्पेस में अलाउड है. ठीक है ना. सो इन 483 दे इट इज गिवन. इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार. ओनली 2 sectors आर देयर. नाउ ऑन पेज नंबर 482 अगेन 483 एमएसएमई सेक्टर के बारे में दिया है. डेफिनेशन क्या होनी चाहिए एमएसएमई की देख लो. In manufacturing, investment in plant and machinery doesn't exceed 25 lakhs micro, 25 to 5 crore small, 5 crore to 10 crore medium. In services, investment in equipments less than 10 lakh micro, 10 to 2 crores small and 2 to 5 medium. ये definition याद कर लो. Now what is given in page number, on page number 483, second paragraph, they have given some 20 items which are reserved for MSE sector, not MSME, micro and small enterprise only. 20 items दिए, तो देख लो एक बार जरा, निगाह मार लो, keep that in mind. Maybe they can ask in MCQ. तो अचार और चटनी, मस्टर्ड ऑयल, अगरबत्ती, मोमबत्ती, all those things are given here. ठीक है. Now other enterprises are not forbidden to manufacture these 20 items. It's just that they need to first ask for a license and they need to take a 50% export obligation. Then also they are allowed. ठीक है. This is the takeaway. Then NIMZs के बारे में दिया हुआ है यहाँ. Very old topic. But let's see some differences. Big integrated industrial township, state of the art, energy efficient technology, social infra, skill development, emphasis on green tech. State governments need to declare NIMZs as industrial townships under Article 243Q. कौन सा पार्ट है ये? Which part? Part 9A. What are the 5 parameters to declare an area as industrial township? First is population. Then density of population, all right, then economic importance, then revenue generation, and lastly percentage of population or employment engaged in non-agricultural activities. All right, these are the 5 parameters industrial township declare करने के लिए. Okay, now comes NIMZs and SEZs. Differences इनका है. Basically SEZs are form for export obligations, export oriented. NIMZs for manufacturing. Operational SEZs are operational, चल रहे हैं कुछ कुछ भगवान की दया से. NIMZs still not operational. Only proposals are there. Taxation exemptions are there. NIMZs capital gains tax recently 2013 में they have been exempted. SEZs tax exemptions have been taken away. 2012 में मैट भी लगना शुरू हो गया, DDT भी लगना शुरू हो गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. सो these are the one of the major reasons why SEZs have not been successful compared to China. एक तो साइज स्मॉल था, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइडेड नहीं हुई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन वेरिएबल टैक्सेशन. देयर शुड बी अ स्टेबल टैक्सेशन रिजीम ना, तभी लोग आएंगे सेटअप करने, बट टैक्सेस हैव बीन चेंज्ड. सो दिस इज द problem with SEZs. Then incentive on green tech. This is the major aspect of NIMZs. All right, energy efficiency, green techs. ठीक है, ये टॉपिक था. Then foreign investment promotion board. It is under which ministry? हाँ? Commerce. It is not under commerce. It is an interministerial body.
It is not under any ministry. It provides single window clearance for FDI proposals not allowed under automatic route. Interministerial body comprises of secretaries drawn from different ministries. Secretary DEA इसका चेयरमैन है. And then its recommendations are considered by Ministry of Finance. 1200 करोड़ का डिस्टिंक्शन है, उससे नीचे है तो ये और उससे ऊपर है तो CCA है. Common mistake to consider it to be under some ministry like Ministry of Commerce or Finance. All right, FIPB. DIPB के कुछ functions है, देख लेते हैं. Under Ministry of Commerce, responsible for administering all aspects of IPR, intellectual property, इसका जिम्मेदारी है. Ease of doing business, EBIS model, this project it has been implementing. All right. Then Khadi is there. खादी मन की बात मोदी जी ने कही थी, सो इतना ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं इसमें, बट वॉट एवर इट इज़ विल सी. ठीक है, वॉट इज़ खादी? खादी संस्कृत वर्ड फॉर कॉटन, बट नाउ डेज एनीथिंग विच इज़ हैंड स्पन, वेदर कॉटन, वूल और सिल्क, इट इज़ कोल्ड एज खादी. देन खादी के कुछ इंडिया बुक में फ़ायदे दिए हैं. इट इंटरलेसेस द थ्रेड्स इन द मैनर दैट अलाउज मैक्सिमम एयर परमिएबल, thus making खादी एज द मोस्ट कंफर्टेबल मेड. ठीक है, बहुत ही अच्छा है, पहन लो सारे. KVIC then this body is there, Khadi and Village, a statutory organization under Ministry of Medium and Small Scale Industries. तो ये KVIC है. खादी किस शेड्यूल के अंडर है? इट इज अंडर 7th शेड्यूल और 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल. इट इज़ अंडर 11th शेड्यूल. ठीक है ना, पंचायत का है ये. तो इसमें KVIC के ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉयमेंट होगा, ऑब्वियसली स्किल जनरेशन होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, प्रोड्यूसिंग सेलेबल आर्टिकल्स, सेल्फ रिलायंस अमंग पीपल. ठीक है, तो MCQ कैन बी आस्क्ड कि KVIC इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है, और खादी सच लाइक दैट, और तो उसमें आप ये देख सकते हो. एक मिनट, सॉरी. So this was from chapter 19. Now come to chapter 6. Now chapter 6 is about basic economic data. Now जितना भी डेटा इंडिया बुक में दिया सारा पुराना है. It is based on 2013-14. यहाँ से अपना टाइम वेस्ट मत करो. Go for economic survey part 2. You have attended the economic survey class. तो वहाँ part 2 में आपको बता दिया होगा सारा डेटा whichever is relevant for this exam. तो रेफर टू दैट डेटा, डोंट गो फॉर दिस डेटा. यहाँ कुछ चीज़ें वील सी. हेयर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इज़ देयर. उसके अंदर 2 ऑफिसेज हैं. इन द फर्स्ट पैराग्राफ दे हैव गिवन CSO एंड NSSO. ठीक है, तो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये टॉपिक दिया है यहाँ पर. सो हेयर थर्ड लाइन इट इज़ गिवन कि इट कंपाइल्स National Accounts, Index of Industrial Production IIP it compiles, then CPI indexes it compiles, then Human Development Statistics it compiles. So ये पता होना चाहिए कि IIP कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है कंपाइल, CPI कौन कर रहा है. It is the duty of CSO. All right. Then पेज नंबर 125 में NSSO का दिया है कि what are the functions of NSSO. So its primary data is collected regularly through household surveys on various socio-economic subjects. तो जितने भी socio-economic subjects हैं NSSO will collect the data. Consumption patterns हो गए for child, women, all those things will be done by NSSO. उसके बाद पेज नंबर 138 there is given some information regarding MP-LAD scheme. MP-LAD scheme बहुत ही पुराना टॉपिक है. Most of you must be knowing about it. Now tell me, a minister of parliament, member of Lok Sabha, he can spend the funds allotted under MP-LAD in where? In which is what is the geographical area? Constituency. And for Rajya Sabha? States. What about nominated members? Anywhere in the country.
they can spend the MPLAD function. Okay, tell me, there is a scheme called Sansad Adarsh Gram Yojana. What is the difference between SAGI and MPLAD? Huh? Fund utilization. क्या डिफरेंस है? विलेजेस, वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि विलेज वाइज दे आर टारगेटिंग कि इतने विलेजेस को करना है आदर्श ग्राम. वन मोर इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज देयर विद रिगार्ड्स टू फंड्स कि देयर इज नो सेपरेट एलोकेशन ऑफ फंड्स अंडर SAGI. दे हैव टू देमसेल्व्स प्रोक्योर द फंड्स. MPLAD में तो दिए हैं फंड्स, यहाँ कुछ नहीं है. ऑलराइट, सो इट इज़ नॉट डुप्लीकेशन. कुछ लोगों को लगेगा कि डुप्लीकेशन है, नई सरकार ने आगे अपना कुछ चलाया, बट देयर इज सेपरेट ऑब्जेक्टिव्स. ऑलराइट, सो यहाँ से पढ़ लेना. दीज आर दी. देन कम टू चैप्टर 7. Now in chapter 7 also some trade related data is given. This also I'll prefer कि you do from chapter 4 of second part of economic survey, page number 50 to 65. 15 पेज में सारा ट्रेड डेटा दिया है. What are our top 5 export items? What are our top 5 import items? What are top 5 exporting countries, importing countries, and which are top 5 trading partners? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से जान लेना. ऑलराइट, देन देयर इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मल्टीलैटरल डेट और ये एक्सटर्नल डेट, इंटरनल डेट. ऑलराइट, व्हाट आर द 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल डेट? फर्स्ट, करेक्ट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स और कमर्शियल बोरिंग्स. ECB भी है उसमें, FCCB भी है, ठीक है. उसके बाद सेकंड इज NRE डिपॉजिट्स, थर्ड इज मल्टीलैटरल डेट एंड फोर्थ इज बायोलैटरल डेट. ठीक है ना, ये पता होना चाहिए. 4 कंपोनेंट्स है. सो ये सब इंफॉर्मेशन इंडियन बुक में दी है. यहाँ दिया है कि एंड विच इज़ मोर, लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट इन एन एक्सटर्नल डेट? लॉन्ग टर्म इज मोर. सो आवर पोजीशन इज क्वाइट सिक्योर, डरने वाली बात नहीं है. तो यहाँ पर कुछ डेटा दिया है कि इस कंट्री से इतना लिया है, उस कंट्री से इतना लिया है. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. बट पेज नंबर 159, फ्रॉम 159 यहाँ पर आर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैव बीन गिवन विद वेरियस कंट्रीज. किसके साथ सीका है, किसके साथ सीपा है, ये सब देख लेना. एंड देन लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ब्रिक्स. 2 स्टेटमेंट्स वर गिवन कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स वाज हैपेंड इन ब्राजीलिया. सेकंड स्टेटमेंट वाज साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट टू जॉइन. तो पेज नंबर 164 पे देयर सम रीजनल ग्रुपिंग्स आर देयर, लाइक बिम्स्टेक इज देयर. Then there is IBSA is also there. Actually IBSA की पहली मीटिंग ब्राजीलिया में हुई थी, नॉट ब्रिक्स. ठीक है, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में यू फाइंड आउट, पढ़ लेना एक बार थोड़ी इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया से. देन 12th में IOR ARC दिया है. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. रिसेंटली इसका नाम चेंज कर दिया है. इट हैज़ बीन चेंज टू IORA. नाम काफ़ी इसका बोला ही नहीं जाता था. सो पहला तो काम ये किया है, और काम वैसे कुछ किया नहीं इन्होंने, यही है बस. Then RCP is there, proposed. Then there is TTP is also there. TPP, Trans-Pacific Partnership. Then there is TTIP is also there. ठीक है, Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership between US and EU. तो देख लेना कौन सी countries involved हैं. Alright, these kind of trade agreements is there. Now come to chapter 13, page number 360. Now here limited liability partnership के बारे में दिया है. A question came in 2010 mains about LLP. काफ़ी पुराना है ये टॉपिक, बट स्टिल यू मस्ट नो, UPSC कैन आस्क. तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप वेयर द एक्सपोजर ऑफ द पार्टनर्स आर लिमिटेड टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. तो ऐसा नहीं कि एक पार्टनर ने धांधली कर दी तो आपको पकड़ लिया, आप भाग नहीं पाए और आप गए काम से. So your exposure is limited to your contribution. So in case of fraud, they cannot come after your personal assets. So this is the advantage of LLP. Most of the partnerships nowadays, they are in LLP also. एक तो ease of registration है इसमें, और secondly ease of partnership है. Your liability is curtailed or limited. ठीक है ना, यहाँ दिया 2008-9
some factual information is given. Then page number 363, SFIO, Serious Fraud Investigation Office. चिट फंड्स को लेके काफ़ी इसका रोल रहा है. सत्यम में भी SFIO was the organization which was involved in the investigation. So इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो. It is a non-statutory organization. Statutory, non-statutory, constitutional, किस टाइप की वो बॉडी है, दिस यू शुड नो अबाउट एवरी बॉडी. ऑल राइट. जोनल काउंसिल्स, zonal council constitutional, statutory, right? It is not mentioned in the constitution. तो SFIO 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बस एक रेजोल्यूशन पास किया. जस्ट लाइक प्लानिंग कमीशन was formed, it was also formed in this way. तो it files prosecutions under Companies Act as well as in Indian Penal Code. उसके बाद पेज नंबर 364 पे सेकेंड पैराग्राफ में दे आर गिवन सम ऑफेंसेस विच इट कैन इन्वेस्टिगेट. तो एक बार नज़र मार लो उस पर. दे कैन गिवन एन MCQ, दिस काइंड ऑफ ऑफेंसेस फॉल अंडर द प्रेरोगेटिव ऑफ SFIO. So falsification of financial statements, this was done by Satyam, Ramalingam Raju. Siphoning of funds invested by public, artificial jacking up of share prices, illegal allotment of shares in gross violation of Companies Act, all those things are the. तो एक बार निगाह मार के इसको ध्यान में रखो. SFIO प्रिपेयर कर लो, it can be asked. Now come to page number 367, Competition Commission of India. Now here not much information has been given, but Competition Commission of India has been in news. तो इसका टर्म होता है the members of Competition Commission 5 years or 65 years. Means after 65 years they retire, otherwise it is 5 years. Then members are selected by a select committee comprising of 5 members. First is Chief Justice of India, then Secretary of Ministry of Corporate Affairs, then Secretary of Ministry of Law and Justice, and 2 experts. These are the 5 members which select members of CCI. And what about further employment? They are not debarred from further employment. They can have employment in private sector also and government sector also. But those companies which were part of the proceedings of CCI, for which these members were also part, they cannot take employment in those companies for 2 years after retirement. Obviously, collusion का aspect हो सकता है, ठीक है ना? They may provide them some favor and immediately take employment in those companies. So this is the only bar. Apart from that, there is no bar on further employment. All right. So in the second paragraph, there it is given Competition Act 2002. It would comprise of a chairman, minimum 2 to maximum 6 members. ठीक है ना? It has 2 aims: to curb anti-competitive practices and to foresee mergers and acquisitions. These are the 2 aims of CCI. ठीक है? This was chapter 13. Chapter 14. Now come to chapter 21. Now in chapter 21 not much is given. एक मिनिमम वेजेस एक्ट दिया शुरू में पेज नंबर 603 में. Though it is not important but still you must know there are 2 concepts: minimum wages act and on the second page it is given national floor level minimum wage. तो जो minimum wage act it is statutory and for center as well as state there are some scheduled employments for which this act applies. But national floor level minimum wage, it is not statutory, it is a non-statutory measure. So how it is enforced? Basically जो minimum wage है it is always more than the floor level wage. तो automatically floor level wage enforced हो जाती है. But only for those scheduled employments for which minimum wages act is applicable. Apart from that it is not much applicable. State government or central government cannot force it. All right.
उसके बाद पेज नंबर 606 पे चाइल्ड लेबर के बारे में दिया है. नाउ हेयर नॉट मच इज गिवन. अच्छा, व्हाट इज द आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर? आर्टिकल 24. सो क्या पोजीशन है उसमें? अंडर 14 years of age, hazardous not allowed, but employment is allowed. So now they are bringing in a bill called Child Labor Protection Regulation Act. उस बिल के क्या कंपोनेंट्स हैं? In that bill they are prohibiting employment under 14 for all kind of occupations except family occupations and entertainment. These are the two areas. And from 14 to 18 they have introduced a new term called adolescent. And for adolescent there also hazardous is not allowed. Alright, they have listed down some non-hazardous industries where they will be allowed to work. Then for penalty provisions they have made stricter penalty provisions. Guardians को first time offense and parents it is माफ, गलती होगी माफ कर दिया. Second time but they will be penalized. तो ये मेंस का वैसे टॉपिक है but maybe it can be asked some provisions of चाइल्ड लेबर एंड प्रोविजन एक्ट. ठीक है ना, कन्फ्यूजन काफ़ी है इसमें. बाकी इसमें दिया है कुछ कुछ चाइल्ड लेबर का. इट इज़ नॉट दैट मच रेलिवेंट. काफ़ी पुरानी स्कीम है. इट हैज़ बीन मच इन न्यूज़ बट आउट ऑफ द ब्लू इट कैन बी आस्क्ड. यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड. जो चीज़ सबको आती है ना वो तो कभी गलत मत करना. जो किसी को नहीं आता वो तो चलो भगवान भरोसे है. बट सिंपल थिंग्स है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट वाला क्वेश्चन था ओरिजिनल जुरिडिक्शन, RSBY डायरेक्ट पूछ लिया. आंखों के सामने हमेशा RSBY रहता है बट ध्यान से अपन प्रोविजंस नहीं देखते. वी डोंट एक्चुअली रिमेंबर मेमोराइज की एग्जैक्ट प्रोविजंस क्या हैं उसके. एकदम रटा होना चाहिए. RSBY इज फॉर BPL कैटेगरी राइट. इट इज़ फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन. नो, इट इज़ फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर. आम आदमी बीमा योजना इज फॉर BPL. RSBY इज फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो एकदम ध्यान से पढ़ना है. करेक्ट प्रोविजंस याद होने चाहिए. प्रीमियम वीमियम तो चलो ठीक है बट जो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है कि फॉर विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दिस स्कीम इज फ्रेम्ड वी मस्ट नो. ठीक है. तो RSBY का है यहाँ पर 75 से 75 to 25 इज द कंट्रीब्यूशन सेंटर इन स्टेट. बेनिफिशियरी हैज़ टू पे ₹30 एनम रजिस्ट्रेशन. हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 30,000 पर फैमिली. हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, कॉमन इलनेस. ऑल राइट, ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस टू बी कवर्ड. ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस टू बी कवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है ना, ध्यान से पढ़ो. सो दिस वाज अबाउट RSBY. देन पेज नंबर 620 पे सोशल सिक्योरिटी दिया है. अच्छा, व्हाट आर द आर्टिकल्स रिगार्डिंग सोशल सिक्योरिटी इन DPSP? चलो आर्टिकल नंबर मत बताओ, बस टेल मी द बेसिक आइडिया. हाँ जी, इतना डायरेक्टली तो नहीं है. बेसिकली आर्टिकल 41 है राइट टू वर्क. राइट, आर्टिकल 42 है कि प्रोवाइडिंग ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क. ऑल राइट, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन विमेन एंड. तो DPSP में थोड़ा बहुत सोशल सिक्योरिटी के बारे में दिया है. ऑल राइट, टेल मी सोशल सिक्योरिटी किस लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट? लॉजिकली सोचो. कंकरेंट में होगा यार, है ना. अच्छा, प्लानिंग will be in concurrent. Planning is in 12th schedule also for municipalities. Economic and social planning. ठीक है, उनका भी ये प्रेरोगेटिव है. अच्छा, टेल मी एजुकेशन. Education used to be in state list, but it has been moved to concurrent list. What about public health? State list, very good. What about electricity? It is also concurrent list. ठीक है. तो बेसिकली जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो याद कर लो कि वो किस लिस्ट में है. ठीक है. सोशल सिक्योरिटी दे आर DPSP देख लो, concurrent लिस्ट है. These acts are not important. These acts are not important. Okay, now come to chapter 23, planning. Okay, tell me a question. बस मेरे दिमाग में जस्ट आया कि सपोज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे लूज द नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा. ठीक है ना, एंड देर इज नो अदर अल्टरनेटिव
Lok Sabha has to be dissolved, and it is dissolved. But there is one minister from Rajya Sabha who is part of the Council of Ministers. What will happen to the membership of that minister? Will he lose? Will he lose or not? He will lose. Why? Basically, Council of Ministers, Lok Sabha dissolve होगी ना, so they have lost their membership, but Rajya Sabha वाला तो continue करेगा. He will not be part of the Council of Ministers because they have been dissolved. ठीक है? Okay, tell me a bill which has been passed by the House of People, but it is pending on the Council of States, and House of People has been dissolved. What will happen to that bill? Lapse. A bill which is passed by Council of States but pending in House of People. Lapse. A bill which is pending in Council of States and not introduced in House of People. It remains. It remains. वो तो पहुंचा ही, उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हो हाउस ऑफ पीपल. हाउस ऑफ पीपल से जो भी टकराएगा और हाउस ऑफ पीपल कोलैप्स हो गया, डिसॉल्व हो गया, वो चीज़ खत्म होगी. ठीक है? ओके, टेल मी, देयर इज सम बिल पेंडिंग इन हाउस ऑफ पीपल एंड द हाउस इज प्रोरोग्ड. What will happen to that bill? It remains. What happens to a resolution? If the house is prorogued, what happens to a resolution? It lapses. What happens to a motion? It will also lapse. So notices, motions, resolutions, they lapse on prorogation, and bills only lapse on dissolution. ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना. Planning. Will they have the voting power? No, they will not have. At the time of suspension? They will not have. They are not suspended. Okay. तो प्लानिंग पे क्वेश्चन आया था पॉलिटी में. They had given 5 institutions, Planning Commission, Ministry of Rural Development, all right, NDC is given, and they had asked which of them are part of planning. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था. ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे. तो डीपीएसपी में प्लानिंग से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 38 and 39. All right. It is regarding providing such a planned socialist pattern of society. All right, reducing income inequality. प्लानिंग में दे हैव गिवन फर्स्ट प्लान से लेके लास्ट प्लान का पूरा ब्यौरा दिया है. If you want to read it, you can read it, though it is not that important. Planning का एक और क्वेश्चन आया था कि the slogan of 12th plan is faster, sustainable and more inclusive growth, development. Rest they have given allocation to different resources. अच्छा, एक चीज़ रहेगी किसी चैप्टर में. National Investment Fund is there, NIF. It was constituted in 2005. It consisted of funds which were found through the minority sale of minority stake in PSEs. ठीक है? तो its objective initially was to invest in social sector schemes. Second aim was to help or revive those public sector enterprises which can be revived. In 2013, the aim of this NIF has been changed. Now, social sector scheme, investment in social sector scheme is not one of the aims. Now its aim has been changed to recapitalization of financial institutions. All right, ये चीज़ ध्यान में रखना. I think in industry कहीं दिया था. I must have missed it. तो ये NIF के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है. इन 2000 आई थिंक 8 एक NIF पे क्वेश्चन आया था, तो उस टाइम ये एम था. दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, राइट? NIF. So this was regarding economics, polity and science and tech from the India book. All right. Any questions? विकीपीडिया से क्यों? मतलब दे आर कम स्कीम्स आर कमिंग डेली बेसिस ना.
पीआईबी से पढ़ा करो, पीआईबी पे हमेशा टेक्निकल एस्पेक्ट दिए होते हैं सबसे आगे. इन न्यूज़पेपर ऑल्सो दे में मिस सम टेक्निकल एस्पेक्ट्स, बट लाइक दिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थिंग आई वाज टेलिंग, इट वाज स्पेसिफिकली गिवन इन पीआईबी. ठीक है, तो आप उधर से पढ़ लो. अदरवाइज टेक सम कोचिंग मटेरियल नोट्स ना, वहाँ पर पूरी लिस्ट दी होती है स्कीम्स की, गो थ्रू देम. और बताओ. सर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पावर का रेट पिटीशन. हाँ, बीस हाई कोर्ट का it has a discretion to entertain writ petitions filed under article 226 or not. बट सुप्रीम कोर्ट के अंडर अगर आपने गलत सलत टेम्पलेट भी बना के दे रखा है, आपने बस कागज़ पे लिख दिया है कुछ कि ये मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, तो भी they'll entertain, they'll draft it under article 32 and they'll entertain. ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट डोंट हैव द डिस्क्रिशन. ऑलराइट. राइट, वेफरलेस इंडिया में एस्टैब्लिश नहीं अभी नहीं हुआ. क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक? वेफर लैब बेसिकली सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं. ऑलरेडी जो चिप्स हम इंपोर्ट करते हैं, तो बस वो चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए वेफर लैब्स बनाई गई. ऑलरेडी. अच्छा, राइट टू प्राइवेसी है अंडर आर्टिकल 21. Right to privacy is there or not? It was in news. Attorney General was saying that there is no right to privacy. So can you file a writ petition in Supreme Court Article 32? कि my right to privacy has been violated. All right. Let's see इसको follow करना right to privacy को. Okay, right to life insurance policy. Is it a right under Article 21? It is there. It is there. It is mentioned in DD Basu. DD Basu में 25-30 कुछ राइट्स दे रखे हैं. They are derived from right to life. तो एक बार उन्हें देख लेना. ठीक है. In 2012 a question came in mains कि what are the various rights in under Article 21. फिल्म से भी आ सकता है. ठीक है. Anything else? That's it. तो thank you. एंड बेस्ट ऑफ लक. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लो, इकोनॉमी के लिए बेसिक्स पढ़ लो, और साइंस एंड टेक के लिए कुछ भी पढ़ लो. ऐसा रखना पड़ता. बेसिक्स पढ़ लेना साइंस एंड टेक के भी, न्यूज़ व्यूज़ देखते रहना. ठीक है, चलो.